Well, hello and welcome to my YouTube channel. And in fact, what I'm going to do is that I'm going to issue an Corrigenda, which is that मुझे कल जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसमें से एक सोल्यूशन जो था वो गलत था, तो मैं इसको अमेंड करना चाहता हूँ। मैंने आंसर 28 दिया था, IOQM का आंसर 10 था, and the question was something like that. Consider a sequence of real numbers of finite length, and that's question number 26. Consider a sequence of finite length, consecutive 4 terms, average. It's strictly increasing है, और जो consecutive 7 terms है उनका strictly decreasing है. What's the maximum possible length of the sequence? So what I said was that कि अगर आपने एक sequence ले लिया A1, A2 and so on, then I said because ये strictly हर चार का जो आपके पास ये है वो क्या है, आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो व्हाट यू गेट इज, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा दैट वेल यू कैन सिंपली से दैट वेल जो 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 कंडीशंस आएंगी वो क्या आएंगी, सो दैट A1 विल बी लेस देन A5, ऐसा कुछ होगा मेरे पास, एंड A2 विल बी लेस देन फर्दर A6, A3 will be less than A7, A4 will be less than A5, or rather A4 will be less than A9, A8, and A5 will be less than A9, and A6 will be less than A10, A7 will be less than A11. अगर इसमें 11 terms हैं तो ऐसा होगा because the sequence is increasing. Okay, now ये तो अभी तक मैंने ऐसा किया कि sequence को strictly increasing करने वाला फंडा लगाया है, बट ये भी बोला कि हर 7 terms जो है उसके corresponding sequence is strictly decreasing. तो what you get is that A1 will be in fact greater than A8, and A2 will be greater than A9, and A3 will be greater than A10, and A4 will be greater than A11. Right, and अगर आगे के टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अगर 11 टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं तो इतना तो ट्रू होगा आपके पास. Right, so now what I'm going to do is that I'm just going to apply transitivity. और देखो फर्स्ट मेरे पास कंडीशन आ जाएगी that since you have A4 is greater than A11, and then you have A11 being greater than A7, and then you have A7 being greater than A3, तो मेरे पास एक ऑर्डर आ गया है कि that A4 is greater than A3. Similarly, I can argue that since A3 is greater than A10, and A3 is greater than A10, and A10 is greater than A6, and A6 is greater than A2, तो मतलब A3 is greater than A2, है ना? तो A3 is greater than A2. तो मेरे पास आया क्या है, आया है मेरे पास A4 is greater than A3, and A3 is greater than A2. Similarly, third, मैं ये कंडीशन यूज कर लूँगा that A2 is greater than A9, and A9 is greater than A5, A9 is greater than A5, and A5 is greater than A1. So fundamentally A2 is greater than A1. So you get that, तो ये sequence का कुछ order आ गया मेरे पास कि that A4 is greater than A2 is greater than A3 is greater than A1. Fourth is कि again I'm going to use the last one, that A1 is greater than A8, and A8 is greater than A4. So A1 is greater than A8, and A8 is greater than A4. So well, this gives you that A1 is greater than A4. But यहाँ से आपके पास आ रहा था कि that A4 is greater than A1, so which is a contradiction. Therefore, it can't have 11 terms. 11 terms नहीं हो सकते. So at max it can have 10 terms, and you can construct a sequence. आप एक sequence बना सकते हैं जब यहाँ पे 10 terms होंगे. Right. And in the same way, एक और construction में मैं बताने वाला हूँ that how do you do this construction. Construction क्या है that the question is that क्वेश्चन ये था और उसका आंसर मैंने बोल दिया था कि 36 होगा, एंड
एक कंस्ट्रक्शन ने प्रोवाइड किया था, सो हियर इज अ कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। द क्वेश्चन वाज कि एक सेट में कुछ रियल नंबर्स दे रखे, इनफैक्ट इंटीजर्स दे रखे, 1 ऑल द 37, और इसमें कुछ n पिक किया था इसमें से आपने, सच दैट ये जो नंबर्स हैं 1 टू ऑल द वे टू n को आप n पेयर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे n पेयर्स में स्प्लिट कर सकते हैं? ai प्लस bi, I runs from 1 to n is a perfect square. अब again, like I'll just say that Gaussian pairing मैं यूज करने वाला हूँ। so think about it that अगर आपके पास if n is even, that case is easy, और ये मैंने कल डिस्कस किया था that if n is even, so that would mean that n is equal to m। तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो नंबर्स कैसे आएंगे? 1 2 3 ऑल द वे अप टू 4m। ठीक है भाई? तो इंडिविजुअल टू का जो सम आएगा वो क्या आएगा? 1 प्लस 4m। मतलब मैं ऐसे ऐसे पेयरिंग कर रहा हूँ, गॉसियन पेयरिंग कर रहा हूँ। 1 प्लस 4m एंड सो ऑन, और ऐसे कितने आएंगे? 2m आएंगे। तो यू विल गेट दिस एज 1 प्लस 4m टू द पावर 2m, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। राइट? सो गॉसियन पेयरिंग लाइक नाइस, इट गिव्स यू प्रूफ कि अच्छा लाइक एन अगर इवन है तो उसके लिए तो सारे कंस्ट्रक्शन आपके पास आएंगे, नहीं? ऑल्सो फॉर n इक्वल टू 1 इट डजंट वर्क, बिकॉज अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो the only numbers that you have is 1 2, their sum is 3, which is not a perfect square. So 2n वाले हम पार्ट पे आते हैं कि rather, जब n की वैल्यू 2n प्लस 1 है तो ऑड का कोई कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे आप? वेल, डिफिकल्ट। तो जब चीज़ें डिफिकल्ट होती है तो एज यूजुअल आई विल से दैट आई लुक फॉर स्मॉल केसेस। देखिए, सबसे पहले मैं तो मतलब मुझे ये पता है कि m इक्वल टू 0 के लिए काम नहीं करता, है ना? तो क्या m इक्वल टू 3 के लिए काम, m इक्वल टू 1 के लिए काम करेगा? m इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? मेरे पास n की वैल्यू 3 आ गई। n की वैल्यू 3 का मतलब आप जो नेचुरल नंबर ले रहे होंगे वो 1 टू 6 होंगे। ठीक है? अगर ये 1 टू 6 हो गया तो थिंक अबाउट इट कि होगा क्या यहाँ पे? होगा ये कि व्हाट आई वांट टू डू इज, यहाँ पे मैं ऐसे करने वाला हूँ कि दैट लाइक लुकिंग फॉर गॉसियन पेयरिंग, और तो मैं ये कहने वाला हूँ कि नॉट नेसेसरली गॉसियन पेयरिंग, बट जैसे 2 4 को मैंने साथ ले लिया, 1 5 को मैंने साथ ले लिया, काइंड ऑफ गॉसियन पेयरिंग, एंड एंड 3 6 को मैंने साथ ले लिया। सो व्हाट यू गेट इज 3 6 इज काइंड ऑफ नाइस बिकॉज इट गिव्स यू 3 स्क्वायर। So this is 6, this is 6, so this is 6 squared into 3 squared, which is a perfect square. And we are done. You might say कि अरे सर ये तो आपने तो सिर्फ n equal to 3 के लिए प्रूव किया, but the same construction holds for n equal to 5. How come? आप पूछेंगे कैसे? तो वेल, अगर आप मुझे बोलेंगे कि भाई ये कब होगा, आप सोच रहे कि n की वैल्यू 3 के बाद कहाँ जाएगी? 5 जाएगी। 5 का मतलब 10 टर्म्स होंगी। तो व्हाट यू डीलिंग विद इज फर्स्ट 10 टर्म्स, सो 7 8 9 10। तो आप इसमें तो बस यही ऐड करेंगे ना, इस सीक्वेंस में बस ये चार नंबर ऐड करेंगे। तो व्हाट आई विल डू इज कि मुझे इसके बारे में तो इसको तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पता ही है। ये 6 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर तो आ ही जाएगा। अच्छा, ये कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा दैट मैं इसमें 6 प्लस 10, or rather 7 plus 10 into क्या कर दूंगा मैं? 8 plus 9, like something like that. Okay, so this becomes 17 squared into 3 squared into 6 squared, है ना? And we're done, because think about it कि अगर मेरे पास 4m plus 1 terms हैं तो they're going to be 1 2 3 4, मतलब मैं n की वैल्यू कुछ, सॉरी, n की वैल्यू अगर कुछ ले ली है 2m plus 1 which is odd, तो 2n का मतलब क्या होगा मेरे पास? 4m plus 2। वो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on all the way up to 4m plus 2। इतने तक का कंस्ट्रक्शन हमें पता है। वो क्या किसकी इक्वल आने वाला है? वो आने वाला है 6 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं 6 टर्म्स यहाँ से हटा दूंगा तो मेरे पास कितनी टर्म्स बचेंगी यहाँ से यहाँ तक? वेल, 4m माइनस 4। एंड मैं कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को ऐड करने वाला हूँ। तो उन दोनों को ऐड करके क्या आएगा मेरे पास? 4m प्लस 9।
फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद कितनी बार आएगा मेरे पास 4m+9, कितनी बार आएगा 4m+9? 2m - 2 times, which is a perfect square because this number is even, and we are done. So it works for every number except 1, and therefore the answer was 36. That's that.